नमस्कार। संसद भवन के प्रांगण से मैं जसलीन वोरा आपका स्वागत करती हूँ। संसद का बजट अधिवेशन यहाँ अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। प्रथानुसार इस सत्र का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के अभिभाषण के साथ होगा। इस समय संसद के दोनों सदनों के सदस्य यहाँ प्रस्तुत होंगे। ये संसद का केंद्रीय कक्ष, जिसका भारत के इतिहास में बहुत ही महत्व है। The Constituent Assembly of India met in this hall between December 9, 1946 and January 24, 1950 to prepare the Constitution, which was given to the people on the 26th of January 1950. The Central Hall was originally used as the library of the erstwhile Central Legislative Assembly and the Council of States. In 1946, it was converted and refurnished into the Constituent Assembly Hall. And the Constituent Assembly met there for the first time on the 9th of December, 1946. Gilded panels all around the Central Hall contain portraits of distinguished national leaders. Overlooking the dais in the Central Hall hangs a portrait of Mahatma Gandhi, which was painted by Sir Oswald Burleigh and donated to the nation by Shri A.P. Pattani, a member of the Constituent Assembly of India. Of course, right in front of us we have portraits of, and here arrives the President's bodyguard, men on their splendid mounts. This bodyguard has the distinction of being the senior-most regiment and corps of the Indian Army, with a history going back to more than 200 years and a superb record of service in war and peace. This heralds the arrival of the President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma, and his cockade. The President, as per the tradition, arrives from the northwest gate. There are 12 gates in all. President's car arriving at the northwest portico, where he will be received by the chairman of Rajya Sabha, the speaker of the Lok Sabha, the Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, Vice President, Shri K.R. Narayanan, the Minister of Parliamentary Affairs, the Secretary General Lok Sabha, and the Rajya Sabha. The Guard of Honor being presented. The President's bodyguard, raised in 1773 by Warren Hastings.
President now being led towards the Central Hall in a procession. During this session, the budget session of the year, the interim railway budget will be presented in the Lok Sabha after the question hour on the 27th of February, that is tomorrow. And the interim general budget will be presented in the Lok Sabha by the Finance Minister on the 28th of February at 5 p.m. As per the provision in Article 87 of the Constitution, the President of India addresses both the Houses of Parliament during the first Parliament session of the year. Half an hour after the conclusion of the address, both the Houses meet separately in their respective chambers when a copy of the President's address is laid on the table and brought on record of each House. In the background, a statue of Mrs. Indira Gandhi. माननीय सभासदों, माननीय महामहिम, as the President steps into the Central Hall, the Marshal announces his arrival. माननीय सदस्यगण, मैं संसद के इस सत्र में आपका स्वागत करता हूं। 10वीं लोकसभा ने अपने कार्यों को काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है तथा आपके कुशल नेतृत्व में देश के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से की गई आपकी सेवाओं के लिए बधाई देता हूं। राष्ट्र ने महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों विदेशों में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार डॉक्टर जूलियस के नेरेरे को प्रदान किया गया। गांधी जयंती समारोह 31 जनवरी 1996 को नई दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर परिसर में स्थित बापू कुटीर में गरिमामय समारोह के साथ संपन्न हुआ। गांधी जी प्रायः वहां ठहरा करते थे। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। विभिन्न समुदायों तथा वर्गों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के लिए सरकार आगामी महीनों में और अधिक सतर्कता बरतेगी। आतंकवाद तथा विद्रोही ताकतों पर काबू पा लिया। अलगाववादी प्रवृत्तियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में सुरक्षा बलों का कार्य काफ़ी सराहनीय रहा है, परंतु पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में हथियार गिराए जाने की घटना से यह आवश्यक हो गया है कि सतर्कता निरंतर बरती जाए। इस घटना की छानबीन काफ़ी तेज़ी से की जा रही है और देश में और देश के बाहर इससे जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। देश के हवाई मार्गों की प्रभावी चौकसी सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों तथा भाड़े के विदेशी सैनिकों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का संयुक्त कार्रवाई तथा वहाँ विकास संबंधी कार्यकलापों में तेजी लाने के फलस्वरूप स्थिति में स्पष्ट सुधार आया है। इससे राजनीतिक गतिविधियों को बहाल करना संभव हो पाया है। संसद ने 1995-96 में संतुलित बजट पारित किया और पिछले कई वर्षों के बाद पहली बार यह आशा की जा रही है कि योजनागत परिव्यय को पूरी तरह से विकास योजनाओं पर ही व्यय किया जा सकेगा और गैर योजना संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। यद्यपि सरकार को इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाकर 17 जुलाई 1996 तक करनी पड़ी, फिर भी सरकार राज्य में शीघ्रातिशीघ्र चुनी हुई सरकार की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के लिए अनेक विकास संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक कार्यकर संस्था के रूप में उभर कर सामने आई है। असम में कार्बी आंगलोंग उत्तरी कछार पहाड़ियों के स्वायत्त जिला परिषदों को और अधिक शक्तियाँ देने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन किया गया है। आर्थिक परिदृश्य में लगातार सुधार हो रहा है। 1991-92 के बाद के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में अपेक्षाकृत काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1994-95 में यह बढ़कर 6.3% हो गया। वर्ष 1994-95 की में वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू बजट में सुधार हुआ और यह सकल घरेलू उत्पाद का 24.4% रही। पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में चालू वर्ष के पहले 6 महीनों में औद्योगिक उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई, जो उल्लेखनीय सुधार है। इसके साथ साथ चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में निर्यात में 24.17% की वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में चहुमुखी विकास के कारण और अधिक आयात भी करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति काफ़ी अच्छी है और अब यह लगभग 16 बिलियन डॉलर है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अगस्त 1991 में लगभग 17% तक पहुंच गई थी, परंतु अब इसे नियंत्रित कर लिया गया है और चालू वर्ष में घटकर 5% के आसपास आ गई है, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे कम है। कृषि क्षेत्र को मिले व्यापक प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है और उसका पर्याप्त भंडार है। आम उपभोग की विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है और पुनर्व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करके देश के सबसे निर्धन इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं। लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान विनिर्माण के क्षेत्र में उत्पादन का लगभग 40% है और ये देश के कुल निर्यात का 34% है। इस क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में
10% की वृद्धि दर्ज की गई और वर्ष 1994-95 के अंत तक 146 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। इस क्षेत्र से वर्ष 91-92 में 13,883 करोड़ रुपए के माल का निर्यात किया गया था। अनुमान है कि वर्ष 94-95 बढ़कर 26,400 करोड़ रुपया हो गया है। वर्ष 1994-95 में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में 4,069 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई। इसी वर्ष इस क्षेत्र में 53,46,000 व्यक्तियों को रोजगार मिला। खादी ग्रामोद्योग निगम को इस वर्ष पहली बार 1,000 करोड़ रुपये का सहायता संगठन दिया गया। इसमें से खादी ग्रामोद्योग निगम ने लगभग 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए जनवरी 1996 के अंत तक कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जिनकी लागत लगभग 235 करोड़ रुपये है। हमारी कृषि नीति मुद्रा एवं जल का एकीकृत रूप में सर्वोत्तम उत्पादन वृद्धि करने की रही है। 8वीं योजना के दौरान वर्षा प्रधान क्षेत्रों के लिए पुनर्संगठित राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम का विस्तार 13 राज्यों के 149 जिलों के 946 प्रखंडों तक किया गया है। मत्स्य विकास कार्यक्रम का विस्तार 7 राज्यों के 36 जिलों के 287 प्रखंडों तक कर दिया गया है। इन कार्यक्रमों को स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से लागू किया जा रहा है। वर्ष 1994-95 में 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। चीनी का उत्पादन भी 1994-95 में लगभग 145 लाख 85,000 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड तक पहुंच गया। सरकार ने चीनी की उपलब्धता और कीमतों में संभावित उतार चढ़ाव के संबंध में एहतियात के तौर पर इस वर्ष चीनी का बफर स्टॉक 5 लाख मीट्रिक टन बनाया है। वर्ष 1994-95 के दौरान संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से 21,113 करोड़ रुपये के कृषि ऋण वितरित किए गए, जबकि वर्ष 1995-96 में इनका वितरण 26,450 करोड़ रुपये तक हो जाने का अनुमान है। वर्ष 1994-95 के दौरान 135,64,000 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की खपत हुई थी तथा वर्ष 1995-96 में इनकी खपत बढ़कर 156,64,000 मीट्रिक टन होने की आशा है। सरकार गरीबों की आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह सजग है। गरीबी का उन्मूलन करने के कारगर कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है। यह ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, आवास, ग्रामीण जलापूर्ति आदि मदों के लिए आवंटनों में पर्याप्त वृद्धि से परिलक्षित होता है। वर्ष 1985-86 और 1994-95 के बीच इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लगभग 20 लाख मकानों का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1995-96 में 1,000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से 10 लाख मकानों के निर्माण का बृहत कार्यक्रम शुरू किया गया है और निर्माण कार्य जोरों पर है। इसके अतिरिक्त अन्य वर्गों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए और अधिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 94-95 के दौरान 1,96,154 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराना है। वर्ष 1995-96 के लिए इस योजना के तहत 2,60,000 व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य है। जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, प्रसूति सुविधा, गरीब परिवारों में अकेले कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर एक मुश्त राशि प्रदान करने की व्यवस्था है। इस पैकेज के साथ साथ समूह जीवन बीमा की एक ऋण योजना शुरू की गई है, जिसमें गरीबों के लिए घड़ी दर पर प्रीमियम की व्यवस्था है। शहरी गरीबों की समस्याओं से एकीकृत रूप से निपटने के लिए 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले श्रेणी 2 के सभी 345 शहरों में नवंबर 1995 में एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम के लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। सरकार ने जिला स्तर उससे निचले स्तरों पर संचालित केंद्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं में पंचायतों
और नगर पालिकाओं की भूमिका एवं शक्तियों का दायरा बढ़ा दिया है। इस पहल के कारण सबसे नीचे स्तरों पर 10 लाख से अधिक महिलाएं नेतृत्व करने का और निर्णय लेने की स्थिति में होंगी। इन निकायों को समुचित वित्तीय प्रशासन दायित्व सौंपे जाने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है। विशेष केंद्रीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत विशेष घटक योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के लिए आवंटनों तथा स्वैच्छिक संगठनों को दी जाने वाली सहायता में काफ़ी वृद्धि की गई है। सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निर्वाह वान्य भत्तों की दरों में भी संशोधन किया है। मल सफाई के कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई है। इस योजना के प्रारंभ होने से अब तक लगभग ऐसे 94,000 व्यक्तियों को अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया गया है तथा 2.5 लाख व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने स्वरोजगार संबंधी कार्यों के लिए अब तक 131 करोड़ रुपया 131 करोड़ 64 लाख रुपये वितरित किए हैं। सरकार ने अब तक 122 कोचिंग केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में समान रूप से भाग ले सकें। अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित किया है। निगम स्वरोजगार के लिए अनेक माध्यम से ऋण वितरित कर रहा है। वक्फ बोर्डों के प्रभावी और लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए 1 जनवरी 1996 से वक्फ अधिनियम 1995 लागू किया गया है। निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 बनाया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए 400 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी से राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। मंदबुद्धि व्यक्तियों और दिमागी पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों की पूर्ण देखभाल करने के लिए राष्ट्रीय न्यास स्थापित करने के बारे में विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। वैक्सीन से रोकी जा सकने वाली 6 बीमारियों से बच्चों की प्रतिरक्षा के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के अभी से उत्साहपूर्वक नतीजे मिलने शुरू हो गए हैं। सन 2000 तक पोलियो उन्मूलन के विश्व लक्ष्य को देखते हुए 9 दिसंबर 1995 को पूरे देश में 3 वर्ष तक की आयु के 7.5 करोड़ से भी अधिक शिशुओं को पोलियो टीके की पूरा खुराक दी गई। इस कार्यक्रम का दूसरा दौर 20 जनवरी 1996 को चलाया गया। आने वाले वर्षों में भी पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा। सन 2000 तक शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6% आवंटन का लक्ष्य प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन राशि में निरंतर वृद्धि की जा रही है। सबके लिए प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 8वीं योजना के अंत तक 110 जिलों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दायरे में लाया जाएगा। इस शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के हिस्से के रूप में देश में समग्र साक्षरता अभियानों का विस्तार 368 जिलों में और साक्षरता उपरांत अभियानों का विस्तार 159 जिलों में किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पोषण आहार प्रदान करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम से 3 वर्ष में लगभग 11 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। पिछले 5 वर्षों से देश में औद्योगिक संबंध परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हड़तालों एवं तालाबंदियों की संख्या तथा बेकार दिवसों की संख्या में बहुत कमी आई है। सरकार नवंबर 1995 में शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत 1 करोड़ 90 लाख औद्योगिक कामगारों और उनके परिवारों को पहली बार आजीवन सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। हमने अपने माध्यस्थम कानून को अंतर्राष्ट्रीय सोच के अनुरूप बनाने के लिए माध्यस्थम और सुलह अध्यादेश 1996 की 96 प्रख्यापित किया है।
इस अध्यादेश से विवादों के समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने के लिए किए गए भारत इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शीघ्र दक्षिण एशिया क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरेगा। पिछले वर्ष हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियां उल्लेखनीय रहीं, जो भविष्य के लिए हमारे मन में विश्वास पैदा करती हैं। इनसेट 2C और IRS 1C उपग्रहों को पिछले दिसंबर में सफलतापूर्वक छोड़े जाने से अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रणालियों को अविकल्प निर्माण और संचालन की हमारी क्षमताओं का ये उपग्रह हमारे दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम एवं संसाधन सर्वेक्षण कार्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वर्ष 1996-97 में इनसेट 2D और 1997-98 में इनसेट 2E एवं IRS 1D छोड़ने की हमारी योजना है। हमने अपने इनसेट वर्ग के उपग्रहों को छोड़ने के लिए जियो सैंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास में भी अच्छी प्रगति की है। इस वर्ष देश का ककरा पर स्थित 10वां परमाणु शक्ति रिएक्टर संतोषजनक ढंग से स्थापित हो गया है और इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। ट्राम्बे में स्थित सच रिएक्टर पूरे देश में 300 से अधिक चिकित्सा संस्थानों में निदान और उपचार के लिए 60,000 से अधिक किट। भारत के पड़ोस के कुछ भागों में वर्ष 1995-96 में सुरक्षा की दृष्टि से अनिश्चितता रही है। पाकिस्तान का अत्याधुनिक हथियार और यूरेनियम संबंधी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का लगातार प्रयास करना हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के इन प्रयासों से हमारे क्षेत्र में तनाव बढ़ता है और इससे हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सशक्त सेनाएं राष्ट्र की सुरक्षा करने में पूर्णतः सक्षम हैं। फिर भी इस संबंध में सरकार इनकी क्षमता बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण भी हमारी सशस्त्र सेनाओं की कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की भावना के लिए उनकी सराहना करेंगे। रक्षा अनुसंधान में कार्यरत हमारे वैज्ञानिकों ने एकीकृत प्रयासों से ही हल्का लड़ाकू विमान नवंबर 1995 में राष्ट्र को सौंपा गया। इस वर्ष के अंत तक इसकी परीक्षण उड़ानें शुरू हो जाएंगी। मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन को सेना में शामिल करने की दृष्टि से पूर्णतः विकसित कर लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बहुआयामी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च कोटि के सुपर कंप्यूटर का विकास किया है, जिससे बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता की पूर्ति हुई है तथा इस क्षेत्र में हम और अधिक आत्मनिर्भर हुए हैं। विदेश नीति के मामले में पड़ोसी राष्ट्रों से हमारे संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। भूटान के साथ हमारे पारस्परिक निकट संबंध इस वर्ष और अधिक घनिष्ठ हुए हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन अधिकारी की अप्रैल 1995 में की गई भारत की यात्रा और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देवबा की इस माह के शुरू में की गई यात्रा से आपसी समझ अधिक बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 1995 में मालदीव में इंदिरा गांधी स्मृति अस्पताल का उद्घाटन किया। ये उस देश के साथ मैत्री और सहयोग की हमारी प्रतिबद्धता का सबूत है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध सौहार्द और विश्वास पर आधारित हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे व्यापार संबंधों में सुधार हुआ है। साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ा है। चीन के साथ लगातार उच्च स्तर पर बातचीत से हमारे संबंधों में गतिशीलता बनी हुई है। हमारे प्रयासों से दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए। हम पाकिस्तान सरकार से आग्रह करते हैं कि भारत के साथ टकराव का रास्ता छोड़कर सभी अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय वार्ता की हमारी पेशकश पर रचनात्मक रवैया अपनाए। पिछले वर्ष 7 दिसंबर 1995 से दक्षिण एशिया अधिमान व्यापार करार के लागू हो जाने से सार्क की प्रगति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है। भारत, ईरान, तुर्कमेनिस्तान द्वारा पारगमन के बारे में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना मध्य एशिया के साथ
हमारे संपर्कों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस वाणिज्य संपर्कों के लिए भारत और मध्य एशिया के बीच सुगम जल भूतल मार्ग स्थापित हो सकेगा। आसियान भारत को संवाद साझेदारी का पूर्ण दर्जा देने पर सहमत हो गया है। इससे भारत और आसियान के बीच बढ़ते हुए आपसी हितकारी संपर्कों का पता चलता है। रूस संघ के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ बना रहा। इस देश के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक अनेक क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का भी पता लगाया गया है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधित विशेषकर आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में और प्रगाढ़ हुए हैं। माली, मॉरिशस, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मिस्र, बुर्किना फासो और घाना के उच्च स्तरीय यात्राओं से अफ्रीकी महाद्वीप के इन देशों के साथ राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिला। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मार्च 1995 में डेनमार्क में आयोजित विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, अक्टूबर 1995 संयुक्त राष्ट्र महासभा की 50वीं वर्षगांठ की बैठक, विशेष स्मारक बैठक और उसी माह कोलंबिया में आयोजित किए गए 11वें कूटनीतिक शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अन्य मामलों को उठाने में मुखर रहा है। निर्धारित समय सीमा में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में की जा रही वार्ताओं में भारत सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, परंतु हम परमाणु अप्रसार संधि का अनिश्चित समय के लिए प्रभावी होना सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के मार्ग में बाधक मानते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य परमाणु हथियार वाले राज्यों को, परमाणु शस्त्रागारों को उचित ठहराना है। चूंकि यह सत्र संक्षिप्त अवधि का होगा, अतः सत्र के दौरान केवल आवश्यक विधायी कार्यों पर ही विचार हो पाएगा। इस सत्र के बाद से प्रख्यापित कुछ अध्यादेश संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 1996-97 के अनुमानित आय और व्यय का विवरण आपके समक्ष इस उद्देश्य से रखा जाएगा कि इस वर्ष की अवधि विशेष के लिए व्यय प्राधिकृत करते हुए लेखानुदान पारित किया जा सके। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के संबंध में भी लेखानुदान पारित किया जाना आवश्यक होगा। सरकार की देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे जनता को अपनी क्षमता का एहसास हुआ है। देश की शक्ति उसकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, उसकी जनएकता में निहित है। पिछले 4.5 वर्षों के दौरान आपने जिस समर्पण की भावना, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय दिया है, वह राष्ट्र को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा। मैं इस सत्र में आपका अपने कार्यों में जुटने का आह्वान करता हूँ और आपके प्रयासों के लिए सफलता की कामना करता हूँ। जय हिंद। Honorable members, I welcome you to this session of Parliament. The 10th Lok Sabha has accomplished substantially its task, and the country has been guided through momentous changes in every sphere. I take this opportunity to congratulate all of you for your dedicated service to the nation. The nation celebrated the 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi, which was marked by a large number of significant activities in different parts of the country and abroad. An important landmark was the institution of the Gandhi Peace Prize for social, political, and economic transformation through nonviolence and other Gandhian methods. The first Gandhi Prize was conferred upon Dr. Julius K. Nyerere. The anniversary concluded with a solemn function on 31st January 1996 at the Bapu Kudir in Valmiki Mandir complex in New Delhi, where Gandhiji used to stay. The law and order situation in the country has been under control. Government would continue to exercise extreme vigilance in the coming months to ensure that relations between different communities and groups continue to be harmonious. Terrorism and insurgency have been curbed. Separatist tendencies have been contained to a very large extent. In this context, the performance of the security forces has been creditable. However, the incident of arms drop in Purulia in West Bengal has highlighted the need for constant vigilance.
In this connection, investigations into the incident and its national and international ramifications are being pursued vigorously. Steps are being taken to ensure the effective policing of the air corridors of the country. In Jammu and Kashmir, due to the concerted drive by security forces against militants and foreign mercenaries, coupled with acceleration of development activities, there is a perceptible change in the overall situation. The revival of political activities has been made possible. Parliament passed a balanced budget in 1995-96, and for the first time in many years, the planned outlay is expected to be spent fully on development schemes without any diversion for meeting the non-planned resources gap. Though government had to seek further extension of President's rule up to 17 July 1996, it remains committed to restoration of representative government in the state at the earliest. In the Northeast, several initiatives have been taken to tackle the economic backwardness of the region. The Northeast Council has emerged as an effective institution for implementing developmental activities. The sixth schedule to the Constitution was amended by giving more powers to the autonomous district councils of Kabi, Anglong, and North Kachar districts in Assam. The economic scenario has been continuously improving. The gross domestic product has shown a substantial faster rate of growth in the years subsequent to 1991-92. In 1994-95, this had increased to 6.3%. Gross domestic savings at current prices improved in 1994-95 and was 24% 4% GDP. Industrial production increased by 12% in the first 6 months of the current year over the corresponding period last year, showing a strong revival. Along with this, exports have gone up further by 24.17% in the first 8 months of the current financial year. Imports have also grown as a consequence of the overall growth of the economy and the industrial sector in particular. Foreign exchange reserves are at a comfortable level of about $16 billion. The annual rate of inflation, which had almost reached 17.91, has been controlled, and the current year, the inflation rate has been brought down to around 5%, which is the lowest in the last 7 years. As a result of the strong support to the agricultural sector, food grain production and stocks have reached very comfortable levels. The availability of various items of mass consumption has been maintained. The public distribution system has been strengthened, and by introducing the revamped public distribution system, additional concessions have been given to those living in the poorest areas of the country. The small-scale industry sector accounts for about 40% of the output in manufacturing and 34% of the country's total exports. It has recorded a growth of 10% during 1994-95 and accounted for employment of 146 lakh persons by the end of 1994-95. Export of goods by this sector are estimated to have increased from rupees 13,883 crore in 1991-92 to rupees 26,400 crore in 1994-95. In the khadi and village industry sector, sales have reached a level of over 4,069 crore in 1994-95. This sector accounted for employment to 53.46 lakh persons in 1994-95. Rupees 1,000 crore consortium credit has been given to KVIC this year for the first time. Out of this, KVIC has sanctioned projects costing about rupees 235 crores by the end of January 1996 to generate additional employment for about 1 lakh persons. Our agricultural strategy has been to increase production through the best use of soil and water in an integrated fashion.
During the 8th plan, rupees 1,100 crore have been allocated for the restructured National Watershed Development Project for rain-fed areas. The coverage of drought-prone areas of program has been increased to 946 blocks of 149 districts in 13 states. Coverage of the desert development program has been further extended to 227 blocks of 36 districts in 7 states. These programs are being implemented with the active participation of the watershed community. The food grain production in 1994-95 achieved a new record of 192 million tons. The production of sugar also reached a record level of nearly 145.85 lakh tons in 1994-95. Government has built up a buffer stock of 5 lakh tons of sugar this year as a precaution against possible fluctuations in availability and prices. Disbursement of agricultural credit through institutional agencies is expected to reach a level of rupees 26,480 crore in 1995-96 as against rupees 21,113 crore in 1994-95. The consumption of chemical fertilizers during 1994-95 was 135.64 lakh tons. It is expected to further increase to 155.64 lakh tons in 1995-96. Government has been acutely sensitive to the needs of the poor. The programs of direct alleviation of poverty have been expanded as reflected in substantial increases in allocations for rural development, employment generation, rural water supply, etc. Under the Indira Awas Yojana, about 20 lakh houses were constructed between 1985-86 and 1994-95. However, in 1995-96, this program has been further stepped up by undertaking a massive program of construction of 10 lakh houses with a budget provision of rupees 1,000 crore and is progressing in full swing. Besides, steps have been taken to augment housing facilities for other sections as also government servants. The Prime Minister's Rozgar Yojana, which aims at providing self-employment opportunities to educated unemployed youth, had benefited 1,96,154 persons during 1994-95. For 1995-96, loans under the scheme are planned to reach 2.6 lakh persons. As the honorable members know, the government has launched the National Social Assistance Program to provide for old age pensions, maternity benefit, and lump sum payment on the death of the primary breadwinner in poor families. Complementing this package is a pioneering scheme of group life insurance, which includes subsidized premium for the poor. As integrated urban poverty eradication program was launched in November 1995 to tackle the problem of urban poor in an integrated 346 class 2 towns with a population ranging from 50,000 to 1 lakh. A provision of rupees 100 crores has been made in current financial year for the program. Government has strengthened the role and powers of the panchayats and nagarpalikas in all centrally sponsored schemes operating at the district level and below. This initiative has also of more than 1 million women as leaders and decision makers at the grassroots level. Similarly, the states are being asked to empower these bodies with adequate financial and administrative responsibilities. Substantial enhancement has been made in the allocation of schemes for special central assistance, for special component plan, for metric scholarships, National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, and aid to voluntary organizations. The government has also revised
the rates of maintenance and other allowances under the post-matric scholarship scheme for scheduled caste and scheduled tribe students. A national commission or Safai Karamcharis has been set up to monitor the implementation of the national scheme for liberation and rehabilitation of Safai Karamcharis still engaged in night soil removal. Since the inception of the scheme, about 94,000 such persons have been trained for other vocations and 2.5 lakhs have been rehabilitated. The National Backward Classes Finance and Development Commission has so far disbursed rupees 131.664 crore for self-employment ventures to enable the OBC candidates to compete on equal terms with general candidates in various recruitment tests and examinations. The government has provided financial assistance to 122 coaching centers so far. The National Minorities Development and Finance Corporation has established linkages with state channelizing agencies. Loans are being disbursed for self-employment. The Waqf Act 1995 for effective and democratic administration of Waqf boards has been brought into force with effect from 1st January 1996. The Persons with Disabilities, Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act 1995 has been enacted to provide equal opportunities for persons with disabilities. It has also been decided to set up a National Finance and Development Corporation for the disabled for an authorized share of capital of rupees 400 crore. A bill to set up a national trust to provide total care to persons with mental retardation and cerebral palsy has been introduced in the Lok Sabha. The ongoing immunization of children against 6 vaccine-preventable diseases has already yielded encouraging results. In keeping with the global goal of eradication of polio by 2000 AD, a supplemental dose of oral polio vaccine was administered to more than 7.5 crore children in the age group 0.0 to 3 years throughout the country on 9th December 1995, and the exercise was repeated on 20th January 1996. The pulse polio immunization will be continued in future years also. The allocation for the education sector has been steadily increased as part of the government commitment to achieve the target of allocation of of GDP by the year 2080. To realize the goal of universal elementary education, 110 districts would be brought within the ambit of district primary education program by the end of the 8th plan. A national elementary education mission has been launched to cover all children up to the age of 14 years by the turn of the century. As part of the National Literacy Mission, total literacy campaigns have been further extended to 368 districts and the post-literacy campaigns to 159 districts in the country. A major national program of nutritional support to children in primary schools covering about 11 crore children from classes 1 to 5 over a 3-year period was launched on 15th August 1995. There has been a remarkable improvement in the industrial relations scenario in the country over the last 5 years. There is a significant decrease in the number of strikes and lockouts and the number of man days lost. Government is committed to successfully implement the employees pension scheme introduced in November 1995, which provides for the first time lifelong social security to about 19 million industrial workers and their families. To bring out arbitration law in tune with the international thinking on the subject, an ordinance called the Arbitration and Conciliation Ordinance 1996 has been promulgated. With this and other steps taken to establish alternative dispute resolution mechanisms, it is hoped will soon emerge
as a pioneer in this field in the South Asian region. The achievements of our scientists in the past year have been noteworthy and give us confidence for future. Successful launches of INSAT-2C and IRS-1C satellites last December once again demonstrated our capability to design, build, and operate state-of-the-art space system, which will be vital for the development of our telecommunications, television, meteorological, and resource survey programs. We plan to launch INSAT-2D during 1996-97 and INSAT-2E and IRS-1D during 1997-98. We have also made good progress in developing geosynchronous satellite launch vehicle GSLV for launching our INSAT-class satellites. During the year, the country's 10th nuclear power reactor at Kakrapar commenced operation and was stabilized satisfactorily. The research reactors have supplied more than 60,000 kits for diagnosis and treatment to more than 300 medical institutions all over the country. During 1995-96, the situation in some parts of India's immediate neighborhood remained uncertain in security terms. Pakistan continuing attempts to acquire sophisticated weaponry and uranium enrichment technology have been a matter of serious concern for us. Pakistan's attempts heighten tension in our region and are likely to trigger an arms race. We have every confidence in the capability of our armed forces to defend the government is determined to ensure their capability in this regard. I am sure honorable members would in this context join me in commending the armed forces for their professionalism and dedication. As a result of the concentrated efforts of our scientists engaged in defense research, light combat aircraft was unveiled in November 1995 and test flights would commence by the end of this year. The development of main battle tank Arjun has been completed with a view to its induction. The DRDO has developed a high-performance supercomputer using multiprocessor technology, which has met a long-felt need and which enhances our self-defense reliance in this field. In the foreign affairs sphere, our relations with our neighbors were further strengthened. Our traditionally close ties with Bhutan were reinforced during the year. The visit to India of the former Prime Minister of Nepal, Mr. Manmohan Adhikari, in April 1995, and of the present Prime Minister, Mr. Sher Bahadur Durba, earlier this month, contributed to developing closer mutual understanding. The inauguration by the Prime Minister of the Indira Gandhi Memorial Hospital in the Maldives in April 1995 is testimony to our commitment to amity and cooperation with that country. Our relations with Sri Lanka were marked by cordiality and trust. Our trade with Bangladesh increased, as did contacts between the peoples of the two countries. The momentum in our relations with China was maintained with a continuing dialogue at the highest levels. Our efforts resulted in promoting good relations with all our neighbors in South Asia, with the sole exception of Pakistan. We urge the government of Pakistan to eschew its path of confrontation with India and respond constructively to our repeated offer of a bilateral dialogue to resolve all outstanding issues in accordance with the Shimla Agreement. A landmark in SAARC's progress was achieved last year with the operationalization of the South Asia Preferential Trading Arrangement, SAPTA, from December 7, 1995. The signing of a trilateral memorandum of understanding on transit by India, Iran, and Turkmenistan, which seeks to establish a viable surface route between India and Central Asia for commercial and other links,
was an important event in the development of our links with Central Asia. ASEAN has agreed to full dialogue partnership status for India. This reflects the growing mutually beneficial relationship between India and ASEAN. Our relations with the Russian Federation continue to be close. Further areas for cooperation in economic, cultural, and other fields were identified. The India-United States relationship registered steady growth, in particular in the economic and commercial areas. Political and economic cooperation with countries in the African continent was promoted through high-level visits to and from Mali, Mauritius, Namibia, Zimbabwe, Egypt, Burkina Faso, and Ghana. India took the lead in articulating the political, economic, social, and other concerns of the developing countries in international forums like the World Summit for Social Development in Denmark in March 1995, the UN General Assembly 50th Anniversary Special Commemorative Meeting in October 1995, and the 11th Non-Aligned Summit in Colombia in the same month. Consistent with its commitment to the objective of complete nuclear disarmament within a specified time frame, India is participating in the negotiations for a comprehensive nuclear test ban treaty. At the same time, we view the indefinite extension of the Nuclear Non-Proliferation Treaty as an obstacle to universal nuclear disarmament, as it seeks to legitimize the nuclear arsenals of nuclear weapon states. As this session will be a brief one, only essential legislation will be taken up during this session. Some ordinances promulgated since the last session will be placed before Parliament. A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the financial year 1996-97 will be laid before you for the purpose of passing vote on account, authorizing expenditure for a part of that year. Vote on account in respect of the states under the President's rule need to be passed. The policies of the government have put the country on the path of growth, enabling the people to realize their potential. The strength of the country lies in the strength of its economy and the unity of its people. During the last 4.5 years, your dedication, wisdom, and vision have left an imprint that will guide the nation into a brighter tomorrow. I commend you to your task in this session and wish you success. Jai Hind.